गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का हमारा पहला टॉपिक है नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन। तो आपको पता है कि यूनियन कैबिनेट ने कल जो है नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन को मंजूरी दे दी है। तो ये एक ऐसा स्पेशल पर्पस व्हीकल होगा जो कि 5,000 करोड़ की शेयर कैपिटल से बनाया जा रहा है और इसकी पेड अप शेयर कैपिटल 150 करोड़ रुपए की होगी। अब ये होगा क्या, ये स्पेशल पर्पस व्हीकल करेगा क्या? जितने भी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं जो कि या तो बंद होने वाले हैं या फिर उनकी स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ऑलरेडी प्लान कर चुकी है, तो उन सब के जो उनका अनयूज्ड या अंडर यूटिलाइज्ड जो आप उनका लैंड पड़ा है या उनके एसेट्स पड़े हैं, उनको जो है वो मोनेटाइज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसी बहुत बड़ी बड़ी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होते हैं, उनकी बहुत ज़मीन पड़ी होती है और वो वेस्ट ही जा रही होती है मोस्टली। तो उसको कैसे प्रोडक्टिवली यूटिलाइज किया जा सकता है, कैसे उसको समझ लो प्राइवेट सेक्टर को कैसे दिया जा सकता है, रेंट लिया जा सकता है उनसे, कैसे उससे हम सबसे ज़्यादा सब्सटेंशियल अमाउंट में रेवेन्यूज जनरेट कर सकते हैं, मोनेटाइज कर सकते हैं। इसका ये सारा काम जो है ये नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन करने वाला है। ठीक है। अब ये जो है नॉन कोर एसेट्स क्या होते हैं? आपका ये लैंड जो हो गया, जो आपके सरप्लस लैंड पड़ा होता है, उसको आप ये नॉन कोर एसेट्स हैं, उनको उनसे हम कैसे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, ये सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, वो काम जो है ये नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन करने वाला है। तो ऐसा ही जो लैंड्स होंगे सेंट्रल पब्लिक सेक्टर कॉरपोरेशन एंटरप्राइजेस के, उनको ये ओन भी करेगा, होल्ड भी करेगा, मैनेज भी करेगा और मोनेटाइज करने की कोशिश करेगा ऐसे सरप्लस लैंड या बिल्डिंग एसेट्स को जो कि नॉन कोर लैंड एसेट्स हैं। ठीक है। अब ऐसे कुछ हमारे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स भी हैं जिनको आगे जो लग रहा है कि जिनको प्रॉफिटेबिलिटी में उनके अगर उनके प्रॉब्लम आ रही है, तो उनको एडवाइस भी करेगा, ये सपोर्ट भी करेगा कि कैसे वो ऐसे लैंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कैसे जो है वो अपने आगे जो है और ज़्यादा वैल्यू रियलाइज कर सकेंगे वो। ठीक है। सो अब जो ये इसमें नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन जो है, इसमें टेक्निकल एक्सपर्टीज भी डाली जाएगी। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट के तो होंगे ही मेंबर्स इसमें, लेकिन टेक्निकल मेंबर्स भी इसके अंदर डाले जाएंगे ताकि जो है मैक्सिमम प्रोफेशनल एफिशिएंसी आ सके। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होंगे, एमिनेंट एक्सपर्ट्स होंगे, और जो है इस इन एमिनेंट एक्सपर्ट्स की या नॉन गवर्नमेंट डायरेक्टर्स की जो सिलेक्शन है वो मेरिट बेस पर की जाएगी। ठीक है। फिर उसके बाद जो है प्रोफेशनल्स को भी प्राइवेट सेक्टर से जो है वो हायर किया जाएगा। मिनिमम मिनिमम फुल टाइम स्टाफ होगा और मोस्टली जो है मार्केट से उठाए जाएंगे स्टाफ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर। तो इस कॉरपोरेशन को मैनेज करने का काम डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज को दे दिया गया है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है राष्ट्रीय आयुर्वेदा विद्यापीठ। तो राष्ट्रीय आयुर्वेदा विद्यापीठ एक समझ लो आप यूनिवर्सिटी कह सकते हो उसको। तो एक यूनिवर्सिटी है जो कि एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर आता है, और इसका इन्होंने भी 25th कॉन्वोकेशन किया है अपना। तो इस साल की जो कॉन्वोकेशन है उसका नाम है आयुर्वेदा आहार स्वस्थ भारत का आधार। ठीक है। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि ये राष्ट्रीय आयुर्वेदा विद्यापीठ है क्या। 1991 में बनी थी ये। आयुर्वेदा की नॉलेज को बढ़ाने के लिए इसको ऑफकोर्स बनाया गया है। टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, मेडिकल एजुकेशन, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स, इन सब की ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और अदर एक्टिविटीज़ भी यही दिखता है। आयुष मिनिस्ट्री ने इसको रिसेंटली एक्रेडिटिंग बॉडी बना दिया था, ताकि जो इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल एक्ट के बाहर के जो कोर्सेज हैं उन सब को जो है ये हैंडल कर सके। ठीक है। इसको एक ऐसी बॉडी बनाया गया है जिसको जो कि आप कह सकते हो आयुर्वेदा ट्रेनिंग एक्रेडिटेशन बॉडी, उसके लिए इनको बना दिया गया है ताकि ऐसे कोर्सेज का ये ख्याल रख सके या फिर उसको मैनेज कर सके। फिर जो है RAV जो है ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वाराणसी के साथ भी कोलैबोरेट कर चुका है ताकि PhD कोर्सेज को स्टार्ट कर सके आयुर्वेदा से रिलेटेड। ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर्स जो है उन्होंने नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल के इनॉग्रल सेशन को जो है वो एड्रेस किया है। तो नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल क्या है कि जो हमारे PM मोदी हैं उन्होंने मन की बात में अपने 2017 में ये सजेशन दिया था कि ऐसी नेशनल यूथ पार्लियामेंट होना चाहिए जिसमें हम यूथ की आवाज़ सुन सकें। और पहली जो है ये नेशनल यूथ पार्लियामेंट जो है 2019 में कंडक्ट की गई थी, और
एक प्लेटफॉर्म दिया गया यूथ को कि वो अपने ओपिनियंस और ड्रीम्स कंट्री के लिए जो वो सोचते हैं वो बता सकें, अपनी जो है गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उनके बारे में यूथ को बताया जा सके और उनके सजेशंस लिए जा सकें। फिर पब्लिक इश्यूज़ पे उनके साथ एंगेजमेंट करना, कॉमन मैन का पॉइंट ऑफ व्यू जानना, ओपिनियंस कैसे वो बना सकते हैं और कैसे उन ओपिनियंस को वो आर्टिकुलेटली रख सकते हैं, ये सारा इस नेशनल यूथ पार्लियामेंट में कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, अब उनको रिस्पेक्ट सिखाना कि टॉलरेंस कैसे कर सकते हैं वो डाइवर्जेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ की, पर्सपेक्टिव्स की, ये सारा भी जो है एक तरह से नेशनल यूथ पार्लियामेंट में किया जाता है। और अब आप सोचो, जैसे कि हमारी नॉर्मल पार्लियामेंट होती है वैसे ही यूथ की ये पार्लियामेंट है, जिसमें अलग अलग डाइवर्स बैकग्राउंड से जो है लोग आते हैं, मतलब यूथ आता है, आपस में इंटरेक्ट करता है, गवर्नमेंट के साथ भी इंटरेक्ट करता है। तो वो आपस में एक दूसरे के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं तो उनको डाइवर्जिंग पॉइंट ऑफ व्यूज़ पता लगते हैं, पर्सपेक्टिव पता लगते हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में डिस्कशंस कर पाते हैं, वो अपना विजन रख पाते हैं कि वो कंट्री को आगे कैसे देखना चाहते हैं। तो ये सारा एक तरह से सिटीजन एंगेजमेंट एक प्रोग्राम इसको कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन। तो यूनियन कैबिनेट ने WHO की ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन को भी मंजूरी दे दी है और ये जामनगर गुजरात में जो है एस्टेब्लिश किया जाएगा। ठीक है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर आएगा ऑफ कोर्स, और ये पूरे वर्ल्ड में अकेला ऐसा ग्लोबल आउटपोस्टेड सेंटर होगा जो कि ट्रेडिशनल मेडिसिन को डेडिकेट किया जा रहा है। इसके बेनिफिट्स क्या होंगे? इंडिया इसके थ्रू आयुष सिस्टम्स को ग्लोबली जो है वो पोजीशन कर पाएगा, उसको प्रमोट कर पाएगा। ट्रेडिशनल मेडिसिन को जो है एक लीडरशिप देने का ये रोल करेगा ये सेंटर। एक स्टैंडर्ड बनाएगा, ग्लोबल स्टैंडर्ड बनाने में, नॉर्म्स बनाने में, गाइडलाइंस बनाने में हेल्प करेगा हमको, जो कि ग्लोबली जो है वो मान्य मान्य होंगी, क्योंकि WHO के अंदर आ रहा है ऑफ कोर्स। और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स, ये सब डेवलप करने में भी ये सेंटर हेल्प करने वाला है इंडिया की। ठीक है, तो अब इसमें हम लीडरशिप दे सकते हैं ग्लोबल हेल्थ मैटर्स में, और ट्रेडिशनल मेडिसिन को कैसे हम ग्लोबली जो है वो प्रमोट कर सकते हैं, मेंबर कंट्रीज़ को हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, तो ये ऑफ कोर्स इस WHO के ग्लोबल सेंटर के थ्रू ही किया जा सकता है। ठीक है, अब ट्रेडिशनल मेडिसिन इन इंडिया ये भी देख लेते हैं थोड़ा। तो आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी, इसको कहते हैं आयुष। तो ये बहुत निगलेक्ट की थी इम्पीरियलिस्ट ब्रिटेन ने, और वो हमेशा सिर्फ एक एलोपैथी को ही जो है प्रमोट करते रहे इंडिया में। और जो है जब इंडिया आज़ाद हुआ तो अब हमने जो है इनको आयुष सिस्टम ऑफ मेडिसिन को या ट्रेडिशनल मेडिसिन को प्रमोट करना शुरू किया। बट ऑफ कोर्स ये जो करंट गवर्नमेंट है इसमें सबसे ज़्यादा प्रमोशन इन सिस्टम्स को मिला। हमारी जो ये आयुष सिस्टम्स हैं, ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम्स, ये प्रिवेंशन ऑफ डिसीज़ पर ज़्यादा फोकस रखते हैं रादर दैन क्योरिंग ऑफ डिसीज़। ऑफ कोर्स क्योर पे भी ये फोकस रखते हैं, लेकिन ये क्या कहते हैं एज अगेंस्ट एलोपैथी। एलोपैथी का कहता है कि आपको कोई बीमारी हो जाती है तो आप उसको ठीक कैसे करोगे, लेकिन जो हमारे ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम्स हैं वो कहते हैं कि बीमारी होने ही नहीं देनी, उसको प्रिवेंट कैसे करना है, उसके ऊपर इनका फोकस रहता है, प्रमोशन ऑफ हेल्थ के ऊपर। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है ना ये, कि आप बीमारी होने ही ना दो। ठीक है, और अगर हो जाएगी ऑफ कोर्स उसके लिए भी इसमें ट्रेडिशनल मेडिसिन में जो है वो सस्टेनेबल और जो है अच्छे उपाय उपलब्ध हैं, लेकिन प्रिवेंशन ऑफ डिसीजेज जो है वो इसका सबसे बेस्ट फीचर है। ठीक है, अब जो है ऑफ कोर्स कुछ चैलेंजेस भी हैं इन ट्रेडिशनल मेडिसिन के। लोगों को सबसे पहली बात तो पब्लिक का फेथ नहीं है इनके ऊपर, लैक ऑफ रिसोर्सेज हैं, लैक ऑफ हेल्थ सेंटर्स हैं, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से जो है ये ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम्स इंडिया में जो है उस लेवल पर नहीं आ पाए जितना कि एलोपैथी इस टाइम पर चलता है। ठीक है, अब इस सेंटर से, ग्लोबल सेंटर से कहा जा रहा है रिसर्च ट्रेनिंग को सपोर्ट मिलेगा। तो ये जो ट्रेडिशनल मेडिसिन जो निगलेक्ट हुआ था पूरे वर्ल्ड वाइड, हमारे खासकर इंडिया का, इसको एक बल मिलेगा और इसको हम पूरे वर्ल्ड में प्रमोट कर पाएंगे। तो हम देखते हैं WHO के बारे में भी थोड़ा सा। तो ये WHO 1948 में फाउंड किया गया था, जिनीवा बेस्ड है, 194 मेंबर स्टेट्स हैं, हेल्थ वर्ल्ड वाइड प्रमोट करने का इसका काम है। फंडिंग कैसे होती है WHO की? WHO की फंडिंग होती है असेस्ड कॉन्ट्रीब्यूशन से, दूसरी होती है वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस। असेस्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस वो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं जो एक किसी भी एक मेंबर कंट्री को देनी पड़ती हैं, क्योंकि अगर उसको मेंबर रहना है तो उसको ये पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये कैसे डिसाइड होता है? कंट्री की वेल्थ के हिसाब से या पॉपुलेशन के हिसाब से ये अमाउंट जो है वो डिसाइड की जाती है। और ये सिर्फ 1/4 ऑफ इट्स फंडिंग, 1/4 ऑफ फंडिंग सिर्फ असेस्ड कंट्रीब्यूशन से आती है, बाकी सारी वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन से आती है। ठीक है, तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, जैसे आपको पता है,
सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है। फिर गावी वैक्सीन अलायंस, वर्ल्ड बैंक, रोटरी इंटरनेशनल, यूरोपियन कमीशन, ये सारे जो है वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा देते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पाल दाधव मैसेकर। तो गुजरात गवर्नमेंट ने 100 ईयर्स ऑफ पाल दाधव किलिंग्स को जो है वो ऑब्जर्व किया है अभी रिसेंटली, और कहा जाता है कि ये जलियांवाला बाग जो था उससे भी ज़्यादा बड़ा एक मैसेकर था। ठीक है, तो इसमें हुआ क्या था कि पाल चितरया और ददवाव विलेजेस जो थे साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट में, तो 1922 में वहाँ पर अमालकी एकादशी के टाइम पर, अमालकी एकादशी एक फेस्टिवल होता है ट्राइबल्स का जो कि होली से पहले आता है। तो उस टाइम पर जो है वो हेर रिवर के पास जो है वहाँ पर ये पाल दाधव और चितरिया विलेजर्स जो है वो इकट्ठे हुए थे, वहाँ से विलेजर्स इकट्ठे हुए थे और वो एक ही मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे। ठीक है, तो इस मूवमेंट का मेन मोटिव ये था कि लैंड रेवेन्यू जो टैक्स था लगान के अगेंस्ट जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन वहाँ पर मेवाड़ भील कॉप्स जो कि पैरामिलिट्री फोर्स थी, उन्होंने फायर ओपन कर दिया और उसमें बहुत से लोग मारे गए। ब्रिटिश का क्लेम तो था कि सिर्फ 22 लोग मरे हैं, लेकिन जो भील्स हैं, जो ट्राइबल्स हैं, वो कहते हैं 1200 से 1500 जो है वो लोग मारे गए थे। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is National Land Monetization Corporation. So Union Cabinet has recently approved the setting up of a special purpose vehicle called the National Land Monetization Corporation. So it will of course be a wholly owned Government of India company, and it will have an authorized share capital of 5,000 crore rupees and a paid up capital of 150 crore rupees. So it will of course undertake monetization of surplus land and building assets of central public sector enterprises and other government agencies. So what is the need of having such an organization or a corporation? So you know that there are non-core assets of these public sector units, and they are basically underutilized or unused, and they are the public sector units are unable to fetch resources or revenues out of these assets. Okay, so now this National Land Monetization Corporation, what it would do, it would rather own, hold, manage, and monetize these surplus land and building assets of these public sector units, and it will try to generate maximum revenue from these assets. Okay, so what the government can do? So this, let's take an example of BSNL. Okay, so this National Land Monetization Corporation would say that you are generating losses, but you have surplus land available with you. If you start generating revenue from subletting or letting your premises. Okay, so it will of course generate revenue, and it will be mostly non-telecom revenue. Okay, so you would not have to pay royalty or AGR on that also. Okay, so it would of course help the telecom company, as well as help the private sector also, because they would get premises for themselves, and mostly these telecom companies are located at prime locations, and I'm just giving an example of BSNL. Of course, this National Land Monetization Corporation would suggest or would advise a whole lot of public sector units. I have just given you an example of BSNL. Okay, so it will not just own the assets, it will hold, manage, and monetize all these assets, which are of public sector companies, which are essentially under closure, or which are being planned by the government to be put under strategic disinvestment. So this NLMC will prioritize these units, these public sector units, so that maximum revenue can be generated for them. Okay, so it will of course also advise and support other government entities who are of course not being closed, or are not being planned to be closed. So but it will of course help them to generate maximum revenue out of these land assets or building assets. Okay, so this NLMC will not be a government type body. It will have technical expertise. Of course, it will have board of directors, which will comprise of senior government officers and eminent experts also. Okay, and this the chairman of these of this NLMC will be appointed through a merit based selection process, and it will not be something like a bureaucrat is made to sit on upon this NLMC. It will be of course a merit based selection process, and most probably uh, uh,
technical expertise uh, would be brought into this NLMC by the government. Okay, so it will of course hire professionals from this private sector, and it will operate with minimal full-time staff, and most of the staff will be taken directly from the market on contract basis. So Department of Public Enterprise, that is Ministry of Finance, has been uh, entrusted with the with providing administrative support to this NLMC. Okay, so now let us see the next topic, which is Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth. So Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth is basically an autonomous organization of Ministry of Ayush, and it is recently celebrating. It has recently celebrated its 25th convocation. So this year, the theme of this convocation is Ayurveda Ahar Swasth Bharat Ka Aadhar. Okay, so this RAV has been operating since 1991, and it basically aims to promote the knowledge of Ayurveda. Okay, so apart from conducting training programs for teachers, it will of course also it also helps in medical education, community training, community health officer, etc. So Ayush Ministry has also uh, Ayush Ministry has also notified this RAV as an accrediting body for those courses which have not been covered under the Indian Medicine Central Council Act. Okay, so a specific body, namely Ayurveda Training Accreditation. Of course, RAV has been formed as a body, namely Ayurveda Training Accreditation Board, for this particular accrediting purpose. Okay, RAV has also been collaborating with IIT Varanasi so as to start PhD courses in Ayurveda courses. Okay. So now let us see the next topic, which is National Youth Parliament Festival. So recently, Minister of Youth Affairs and Sports has addressed the inaugural session of National Youth Parliament Festival 2022. Of course, the valedictory session will be taken by Lok Sabha Speaker only. The inaugural session has been taken by the minister, and this National Youth Parliament Festival is basically a suggestion that emanated from Prime Minister Modi during his Man Ki Baat address in 2017. So from 2019 onwards, we have been conducting this National Youth Parliament Festival to hear the voice of our youth. Okay, so who will be, of course, joining public services and other types of careers in the coming years. So this National Youth Parliament Festival, you can see it as a form of mini parliament or a youth parliament, where the youth is given a platform to voice its thoughts and opinions. And the government also gets a chance to make this youth aware about the government schemes and policies, and take new suggestions and innovative suggestions out of this youth. So it will basically this parliament basically gets the youth to engage with each other and understand their point of view, and also have the youth also, once, because this youth is represented from various parts of the country, so they also get to learn about diverging perspectives from other parts of the country, and they also get to respect the culture and traditions of the other parts of the country. Okay, so this National Youth Parliament Festival basically provides a platform for engagement of our youth, and among of course amongst themselves also, as well as with the government too. Okay, so government also gets innovative ideas from them, and these opinions, their opinion and their aspirations are made aware to the government, so that the government can plan accordingly. Okay, so now let us see the next topic, which is Global Center for Traditional Medicine. So recently, Union Cabinet has given the approval for the establishment of WHO Global Center for Traditional Medicine. It will be located in Jamnagar, that is in Gujarat, and it will be under the Ministry of Ayush. Okay, so it is the only global outposted center for traditional medicine across the world. So it will of course immensely benefit India in positioning Ayush systems across the globe. It will provide leadership
on global health matters pertaining to traditional medicine. It will help us to develop norms, standards, and guidelines which will be applicable globally in terms of traditional medicine. Uh, or it will also help us to launch capacity building and training programs in the field of traditional medicines, which will, of course, be applicable around the globe. So the field of traditional medicine in India has been very wide. So when the British were ruling us, they only promoted the allopathic sciences, allopathic system of medicine, and this Ayush, that is Ayurveda, yoga, naturopathy, Unani, Siddha, and homeopathy. These were neglected, of course. But after independence, the government started promoting these Ayush systems. But of course, you know that the current government has been promoting it very proactively. And what is the difference between the allopathic system of medicine and our traditional medicine systems? So you know that allopathic systems are mostly curative. They try to cure the disease. Okay, but these traditional medicines are mostly focused upon prevention of disease. So they say that you do not let the disease enter the body. How you can prevent yourself from the diseases? Okay, so it promotes health rather. Okay, so slowly people are adopting these traditional medicines also, traditional systems of medicine also. But there are certain challenges, like people still do not have trust upon them. We have these systems lack, and they have inadequate resources. There is a lack of health centers and practitioners also. So there are challenges for them also. Okay, so let's also see about the World Health Organization. So it was of course founded in 1948 in Geneva. It has 194 member states, and it aims to promote global health. So funding for WHO comes from two sources. The first one is, of course, the assessed contribution. So this is the contribution which is given by the member states to in order to be a member. So this is basically a compulsory contribution. They have to one a member has to pay it in order to be a member of this organization. So it is just 1/4 of the total funding of WHO. The 3/4 of its WHO's funding comes from voluntary contributions. So of course member states can also contribute voluntarily, but most of the funding comes from organizations like Bill and Melinda Gates Foundation, World Bank, Rotary International, European Commission. So these are the bigger chunk of WHO's funding. Okay, that's why you know that WHO gets influenced by outsider or external actors more than the member states. So now let us see the next topic, which is Pal Dadhav massacre. So recently, Gujarat government has marked 100 years of Pal Dadhav killings. So it has been uh, claimed to be the it is claimed to be the massacre which was bigger than even the Jallianwala Bagh massacre. Okay, so what had happened during that period in 1922? Villagers from Pal, Dadhav, and Chitariya villages of Sabarkantha district, they gathered near the banks of river Hair to uh, on the day of Amalki Ekadashi. So this on this Amalki Ekadashi, these tribal, it is a tribal festival which just falls just before Holi, and they were basically participating in Eki movement. So this movement was basically a movement to protest against Lagan, that is the land revenue tax imposed by by the British on and the feudal lords on the peasants. So they were protesting against that. But the Mewar Bhil Corps, that is a paramilitary force of the British, they opened fire on these tribals or the gatherings, and the British claimed that only 22 people were killed, but the tribals claimed that about 1,200 to 1,500 of the people died at that massacre. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.